Hello bachchon, so let's read the question. The question says in myosin filament A and B are the sites for binding of what respectively. A and B sites यहाँ पे pointed out है, labeled है. So पहला option है ATP and actin, second is actin and ATP, third is troponin and ATP, and fourth is troponin and actin. So the key concept of this question is structure of contractile proteins. Contractile proteins जो होती हैं वो basically two होती हैं. First is actin, which is also called the thin filament, and second is myosin, which is also called the thick filament, and they together form a structure called the myofibril. सबसे पहले एक्टिन के स्ट्रक्चर में एक्टिन के जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं दे आर कॉल्ड जी एक्टिन्स और ग्लोबुलर एक्टिन्स. एंड इन जी एक्टिन से जो पॉलीमराइज्ड होके पॉलीमराइजेशन के बाद जो प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड द एफ एक्टिन. In an actin filament, the G and the F actin, two molecules of F actin, two molecules of the F actin, they are helically wound over each other. Moreover, there are two filaments of another protein which is called the tropomyosin, which basically runs along the length of the filamentous actin. The two filamentous actin which are helically wound upon each other. Another complex protein which is known as troponin is present at regular distances over the tropomyosin. It is distributed evenly over the tropomyosin filaments. Resting state में इस troponin का काम होता है to mask the active sites of the actin molecule. So coming to myosin, the second structure is the myosin. Myosin के जो monomers होते हैं they are called the myromyosins, and ये भी ultimately जाके एक polymerized structure बनाता है. Myromycin के दो structures होते हैं. One is the head or the globular head with a short arm, and second is its tail. This is called the heavy myromyosin or HMM, and this is called the light myromyosin or LMN. ये जो globular head होता है along with its short arm, they actually project out at a certain angle. They project out at a certain angle and at particular distances from the polymerized myosin. This region forms the head. This is the tail region. ये वाला region पूरा cross arm बोला जाता है, which projects out at certain angles and at particular distances from the myosin. Head region में particularly दो sites होते हैं. The first site is the actin binding site, and second is the ATP binding site.
एक्टिन बाइंडिंग साइट पे जो मायोसिन होता है, इन द एक्टिन बाइंडिंग साइट इट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एंड जो दूसरा साइट होता है दैट इज द एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट का जो प्रॉपर्टी होता है इट इज लाइक एन एटीपीएज एंजाइम। जो मायोसिन का हेड होता है इट एक्ट्स लाइक एन एटीपीएज एंजाइम, दैट मीन्स इससे जो भी एटीपी बाइंड करता है इट हाइड्रोलाइजेस द एटीपी to release energy and hence help in muscular contraction. So coming back to the question में हमें बताना है कि A and B sites कौन सी हैं। पहला साइट जो है this is the actin binding site, दूसरा साइट होता है ATP binding site. So this is the actin binding site, A is the actin binding site and B is the ATP binding site. ATP and actin ये गलत होगा। थर्ड इज ट्रोपोनिन एंड एटीपी। ट्रोपोनिन जो होता है वो एक्टिन का पार्ट है, सो दिस इज रॉन्ग। अगेन ट्रोपोनिन एक्टिन का पार्ट है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। So the final answer for this question is option D. Hope you understood well. Best of luck.